Hey guys, welcome back to our channel. I'm Sean and this is Anglo Bong. Today I'm going to react to it's not a very new video, it's pretty old, but it's something off topic. Usually we do reactions to music videos and to movie trailers, teasers. लेकिन आज हम लोग कुछ अलग टाइप का रिएक्शन करने वाले हैं. It's a different type of a reaction. It's something to do more in terms of politics. And in this time and age, uh, it's too much of differences between who you support, who you don't support. So I thought let's try to bring things together and see what this video is all about. Personally, it has been a journey for me as well, from what I used to believe to what I believe now, and what maybe in the future I could believe. But we have seen a shift in the general media, general news outlets, और जो 10-15 साल पहले, maybe 10-15 years ago, people would blindly trust the media, whether it is BBC, CNN, even India में we have NDTV, Republic TV, different channels, news channels. uh, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि लास्ट 4-5 साल से there's been a huge shift in the traditional media, you can call it, जो बड़ा बड़ा नाम थे. Now people are turning to different alternative sources like podcasts, like YouTube channels who give their opinions, because people have realized कि यहाँ पे ऐसा कोई agenda नहीं है, because we are not sponsored by huge corporations who have interests कि हम एक side story बताए. So I thought let's give it a chance and let's see what this video is about. So it's basically termed as student support socialism. तो ये यूएस में, बट हमारा इंडिया में भी सेम केस है कि बहुत सारा गवर्नमेंट फंडेड या प्राइवेट फंडेड स्कूल्स, कॉलेजेस, दे आर मोर मीन राइट विंग थोड़ा बहुत है, लेकिन लेफ्ट विंग बहुत ही ज़्यादा है, which they're trying to push socialism, even communism ideas, Marxism ideas to the next generation. क्योंकि पता है कि अगर they are completely brainwashed, then they'll also vote according to their what they are thought. तो जो बच्चे को सिखाएंगे वही वो लोग का दिमाग में रहेगा. तो आई मीन आई वोंट टॉक टू मच. आप लोग शायद वीडियो देखते चाहते हैं, तो आई डोंट वेस्ट योर टाइम. सो लेट्स गेट इनटू इट एंड लेट्स चेक आउट द वीडियो विथ यू गाइस. I'm Cabot Phillips with Campus Reform. Today we're at Florida International University talking to students about their opinions of socialism and if they'd support a socialist GPA policy. Would they be willing to share their high GPA with people that have a low GPA? Because after all, it's all about equality. Which would you rather have in America, socialism or capitalism? I would say socialism. How do you view the word socialism, favorably or unfavorably? I guess I would go with favorably. Like, I have family in Europe. They go to college for free. Their healthcare is paid for. They don't have to worry about it at all. I favor that over capitalism. Okay, got it. I also think I favor that, like socialism over capitalism. Socialism is more geared toward like helping the people in your, the governed. I'd rather people have that same. It's surprising to see कि बहुत लोग, many of them are choosing socialism, being college students, क्योंकि they're wanting free college, free tuition. लेकिन दुनिया में कुछ फ्री नहीं है, दैट इवन यू गाइज नो. तो अगर एक चीज़ फ्री है तो उसके पीछे कुछ कारण है. कोई दूसरा टैक्स दे रहा है, ज़्यादा टैक्स दे रहा है, कोई उनको सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ भी फ्री नहीं है और गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है. जो पैसे गवर्नमेंट के पास है वो हमारे पैसे है, जो टैक्स, इनकम टैक्स और अलग अलग प्रॉपर्टी टैक्स, व्हाटएवर टैक्स, वो गवर्नमेंट के पास है. सो अगर हेल्थ केयर, मेडिकेयर या कॉलेज फीस उसको फ्री कर देंगे, तो ऐसा नहीं कि फ्री है. ऑब्वियसली उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ दूसरे लोग टैक्स देना पड़ रहा है, तो इट्स नॉट रियली फ्री. सो दिस किड्स आर रियली नॉट confident on what to answer, how to answer.
opportunity. There's a lot of excess in America. The main idea of socialism being that people at the top are doing their fair share to help people at the bottom, trying to prevent disparity of income and trying to prevent excess, as you called it. So on campus, if there's a GPA disparity where there's people at the bottom with a poor GPA, would you support a policy where people at the top spread the wealth, give that GPA to people at the bottom? Help them get a better GPA. Yeah. I'm all for helping. I wouldn't give let me just give you some of my points. But it's about being fair, right? We got to help people at the bottom. I've lost a lot of sleep, so I don't know if I will be fair. It's hard. I guess it would be kind of hypocritical for me to say no. That's completely different How is it different? because I'm studying all day for my grade. What do you mean by sharing it? Literally, giving them a chunk of my GPA? Yep. I would want to say no straight up. But what's the difference between earning a high GPA and not wanting to give it away, but then earning a lot of money and also not wanting to give that away? Well, I feel like the difference is that you I like अच्छा एग्जाम्पल दिया है बिकॉज इफ यू हैव अ वेरी हाई स्कोर तो यूएस में जीपीए बोल के एक ये है यहाँ पे ऑल्सो वी हैव डिफरेंट बोर्ड एग्जाम्स कॉलेज एग्जाम्स तो इफ यू आर गेटिंग अ हाई स्कोर से 80-90% और जिसका बहुत कम परसेंटेज है 25-30 वो फेल हो रहा है तो वुड यू गिव एटलीस्ट 20-30% ऑफ योर स्कोर दूसरे बंदे को जिसका स्कोर बहुत कम है ताकि वो भी पास हो जाए वो भी उसको एक फर्स्ट डिवीजन मिल सकता है तो मैक्सिमम जो कॉलेज स्टूडेंट वो लोग ना बोलेंगे नॉट पॉसिबल व्हाई शुड आई हैव वर्कड हार्ड मैंने दिन रात अपना पढ़ाई ठीक से किया मैंने कुछ पार्टी कुछ भी नहीं किया ताकि इसमें मैं फोकस दे सकता हूँ और मैं अच्छा मार्क्स ले आ सकता हूँ सो द सेम थिंग अप्लाइज इवन टू एंटरप्रेन्योर्स बिजनेसमैन जो अमीर लोग हैं वो लोग भी ऐसा नहीं कि हाँ बहुत कम है जिसका जो हेरिडिटरी पैसा है जिसके दादा के पास ग्रैंड ग्रैंडफादर के पास पैसा था तो उनके पास भी है लेकिन जो न्यू एज करोड़पति है लखपति है वो नॉट लखपति तो सब ऑलमोस्ट है लेकिन दे हैव स्ट्रगल्ड जैसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो लास्ट 5 years 10 years के बीच में अमीर बन चुका है तो वो लोग भी बहुत ही स्ट्रगल किया है वो लोग भी बहुत ही हार्ड वर्क नॉन स्टॉप किया है सो इट्स नॉट फेयर कि इतना हार्ड वर्क देने के बाद भी हम अपना जो प्रॉफिट है जो रेवेन्यू है हम किसी और को दे दें इट्स टेक्निकली नॉट फेयर आई मीन इट्स नॉट राइट तो सेम इज अप्लाइड टू ऑल्सो द स्कोर्स वहाँ पे वो लोग ना बोल रहे सो इट्स फनी study for your grades, right? And grades often reflect how much time you spend studying. But You gotta work pretty hard to become a millionaire. I mean, I'm not denying that fact either, but for the regular working person, Do you think there's a similarity between earning your salary and maybe not wanting to give it away to people that aren't working to earn it? And same thing with the GPA where you earn it and you say, well, I don't necessarily want to give it to anyone who might not be working for it. Right. I think it's just that whole sense of thinking that no one's going to work for it. I mean, I sacrifice a lot to get my GPA. I don't go out as I'd like to, but that's for something like a greater goal in the future, the way I Exactly. see it. So, no, I wouldn't sacrifice my own time to help somebody else who didn't want to make those same sacrifices. There's some people who are in the bottom, but they really are working, and there's some people who are in the bottom and they deserve that poor GPA. Kind of like people making money with their income? Exactly. You know what I'm saying? Like some people. Let's not throw shade. Isn't it about helping the less fortunate? Really profiting off of my work for you. So who's really the bad guy here? I don't think that'd be a good idea because then you're taking away from people that earn that grade. And what about the ones that aren't really working hard for their grades? So they're just going to get something they don't really deserve. obviously You get similar with your salary? Yeah, I definitely do. No, that's the complete opposite of meritocracy. Okay. The complete opposite. That's awful. I don't think they're comparable because your GPA is not directly linked to your quality of life necessarily. But you still have to earn it the same way you'd have to earn a salary, right? Well, I don't think most rich people in this country necessarily earn it. Much of that money is inherited. Much of the money, is made from the stock market, which isn't. They're not actually working for that. They're pressing a button behind a computer for that. I mean, Well, I mean, there would be no point to having a GPA because then if everyone has the same, then
there's no metric, right? But it's all about fairness, right? Well, like, is it fair? Like, I look at it this way, right? Is it fair for everyone to have the same outcome or to have the same opportunity, right? For me, having the same opportunity is what is fair, right? Not the same outcome, right? Because if I work harder than you and I get a better result, then it is only fair that I get a better grade or I get a better opportunity than you, right? Go. So, guys, this was the video Students Support Socialism. So, I like how he compared, how he gave examples that you guys support socialism. So, all of them said yes, हाँ हम लोग support करते हैं socialism, and we wish that the rich give their fair share taxes में, और उनको फ्री हेल्थ केयर, फ्री कॉलेज, फ्री ये फ्री वो सब कुछ फ्री चाहिए ज़िंदगी में. लेकिन उसके पीछे लाइक आई मेंशन उसके पीछे कुछ कोई ना कोई टैक्स दे रहा है ताकि वो फ्री हो सकता है. ऐसा नहीं कि हर कुछ फ्री है. एंड फिर when he brought up the topic that would you share your scores with someone who is less um, not as bright or not as qualified as you, would you share your scores so that even they can get a good grade या फर्स्ट डिवीजन वो पास हो सकता है. और सब ने मना कर दिया कि नहीं, मैं अपना स्कोर शेयर नहीं करूँगा, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने दिन रात स्टडी किया, मैंने दिन रात अपना 100% एफर्ट दिया है. आई हैव नॉट गॉन पार्टीड, मैंने कुछ पार्टी कुछ नहीं किया. आई हैव स्टडीड थ्रू आउट and I deserve those marks. Same thing also applies for those who have made it rich. For example, people who have started companies like Uber, Swiggy, Zomato, फिर आपका वाओ चाइना, वाओ मोमो जो फास्ट फूड चेन है. ऑल द इन द लास्ट 10-15 years जितना सारा मतलब कंपनी जो है इंडिया में जो स्टार्टअप कंपनी है, अभी वो लोग बहुत बड़ा बन चुका है. तो दैट ऑल्सो बिगैन फ्रॉम ग्रास रूट्स, मतलब छोटा से वो लोग एक्सपैंड करके अभी बहुत बड़ा हो चुका है. तो वो लोग भी 10 साल 15 साल पहले बहुत स्ट्रगल किया, बहुत लॉसेस में आया, बहुत ही सैक्रिफाइस किया, ताकि आज वो लोग एक अच्छा पोजीशन में पहुंच चुका है. दे हैव रीच्ड अ गुड पोजीशन इन बिजनेस, इन द लाइफ, प्रोफेशनली स्पीकिंग. सो दे हैव एक्चुअली सैक्रिफाइस्ड एंड दे हैव स्ट्रगल्ड, इसलिए वो लोग उस जगह पे है. अभी उनको बोले कि नहीं आप अमीर हो इसलिए आपका ये गलती है, आप क्यों अमीर हो, आपको ज़्यादा टैक्स देना चाहिए. सो दैट इज़ आई मीन नॉट फेयर. आई मीन जिसको हार्ड वर्क करना था वो लोग उस जगह पहुंच गए, जिसको हार्ड वर्क नहीं करना है उसको बस बैठ के कमाना है, बैठ के बाकी सबसे हेल्प चाहिए. आई थिंक इट्स नॉट फेयर. जैसे आप अपना स्कोर, अपना कॉलेज का जो एग्जाम स्कोर्स किसी को और देंगे नहीं, बिकॉज दैट इज़ योर हार्ड वर्क. सेम थिंग ऑल्सो अप्लाइज फॉर दोज हु हैव मेड इट बिग इन लाइफ. तो वाई शुड इवन दे गिव. हाँ, चैरिटी बोल के वो लोग दे सकते हैं, लेकिन it's their hard earned money. Same thing also if you have a job, not only businessman, even take example of a job. अगर आपके पास जॉब है, नौकरी, आपके पास अच्छा इनकम है, हर महीना आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया कमा रहे हो, तो विल यू गिव 50% अवे क्योंकि दूसरे के पास इतना सैलरी नहीं आ रहा है, 10-15 हज़ार सैलरी मिल रहा है किसी को, तो कॉम्पनसेट करने के लिए आप अपना 50% सैलरी उनको दे नहीं, बिकॉज यू हैव ऑल्सो स्ट्रगल्ड. आप स्टार्टिंग से अभी तक जितना जॉब्स चेंज कर चुके हो, एक्सपीरियंस हो गया आपका, तो दैट मैटर्स इन योर बेसिक ओवरऑल कॉम्पनसेशन जो सैलरी मिल रहा है आपको. और जिसका अभी ग्रोथ अब से हो रहा है, ऑब्वियसली ही इज अ फ्रेशर, उनको इतना सैलरी नहीं मिलेगा, या हो सकता है उनका बहुत साल का एक्सपीरियंस है लेकिन वो हर जॉब बहुत जल्दी चेंज किया, तो इट्स अफेक्टेड हिज करियर, इसलिए अभी भी उनका सैलरी बहुत कम है. सो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन योर लाइफ चॉइसेस, आप क्या डिसीजन लेते हो, इट डिपेंड्स ऑन मेनी मेनी फैक्टर्स. तो सुनने में अच्छा लगता है सोशलिज्म, हाँ बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसका जो हकीकत है इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट रियलिटी देन व्हाट इट साउंड्स लाइक. सो वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो, और मुझे लगता है कि इस टाइप का वीडियो भी इंडिया में होना चाहिए. तो इफ़ यू गाइज हैव कमेंट्स रिगार्डिंग विच इज़ बेटर, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म, दोनों में कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स डेफिनेटली है. ऐसा नहीं कि कैपिटलिज्म बहुत ही अच्छा है, उसमें भी थोड़ा सा
रिस्क है, बहुत ही अनफेयर हो सकता है, बट आई थिंक ओवरऑल पिक्चर आप देखे जाएंगे तो आई वुड एनी डे प्रेफर कैपिटलिज्म, क्योंकि उसमें किसी का भी ग्रो होने का चांस है। उसमें क्या है कि इट इंसेंटिवाइजेज हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क करोगे आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा इन कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट सोसाइटी। बट आई थिंक इन सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट सोसाइटी में जानबूझ के हमको हमारे सब मतलब पॉपुलेशन है उनको दे मेक देम लेजी, हार्ड वर्किंग नहीं। आप बैठ के कमाओ, बैठ के आपको कुछ कुछ पैसे मिलेंगे, आपको कुछ काम करने का ज़रूरत नहीं है। अगर काम भी करेंगे तो सब इक्वली होगा, तो इट्स नॉट फेयर। आई मीन द मोर यू वर्क द मोर यू शुड अर्न बेसिकली। So this is the whole scenario, the whole story of this video, uh, which I pretty enjoyed actually. काफ़ी अच्छा था. So if you guys have your comments कि कौन सा अच्छा है, socialism या capitalism, क्यों अच्छा है, तो mention it in the comment section. I will appreciate it. And that was my reaction. If you guys like the video, आप लोग like कीजिए, वीडियो को share कीजिए, और अगर यहाँ पे first time आ चुके हो, then you have to subscribe to Anglobong. And until the next time, I'll catch you guys very, very soon. Bye.